Bismillahirrahmanirrahim. Today I am giving you a lecture regarding the CCNA. CCNA is basically the most demanding certification nowadays in the networking areas. So, if you want to move towards the networking, it's the basically a first step or a foundational step to move into the networking career. So, I will little demonstrate you regarding the course outline and some course lectures through which you can basically uh, take an idea that what is the main contents and what are the main trends which are following in current CCNA. So this is basically the I'm presenting you on the behalf of OMNI Academy, right? Right. So the basically the course title is basically the CCNA, and I'm the instructor of this course right now. I'm basically a Cisco certified instructor, right? So the basic the behind the CCN is that if you are willing to take any networking job, then it's very important to be uh, knowledge regarding the course, that if you can go for a professional job, then you need a basic knowledge regarding the CCNA so that you can fulfill all the requirements of the job and professional environment. Basically, today I will basically demonstrate you regarding the uh, Cisco evaluation, Cisco campus switching, right? What is it all about and how Cisco has turned into a nice and you can say a very professional organization. Basically, as you all know, that Cisco is basically it's a worldwide vendor of all the IT equipments, especially in routing, switching, and firewalls. So we will try to cover some course contents as well over there. Okay, the main current session of this CCNA is basically belongs to 200-301. So we will try to cover all the specs in this course. Okay, so first I will give you an course outline introduction, that what is all about CCNA. So you can see we have a latest course outline of CCNA exam, which is 200.3 and 301. You can see exam description over there that we have around 120 minutes exam, right? In which we will cover all the modules. Like first one is network fundamentals, then we will move to the network uh, access, second module, right? And in the third module we have IP connectivity, right? And in the fourth module we have IP services. You can clearly see there over there, IP services, right? And the fifth module we have security fundamentals. Okay, okay. You can clearly see there are different topics in the certain modules which we cover through our theory topics and through our lab scenarios or simulation as well. Okay. So it's basically this course is all about the theoretical background as well, and we will conduct some lab scenarios as well, so that you can cope up all the requirements of the course and you can prepare yourself for the future. And the last module is basically automation and programmability. Okay. So there are different little topics around in these 6 modules. It is basically breaking into certain subtopics which we will cover in the classes.
So if you have a basic knowledge regarding the at least basic prerequisite is basically the basic requirement for this doing for this course is basically if you are computer proficient, at least computer proficient, and if you have a little background regarding the networking, like what is LAN, WAN, and switching, if you have. But if you don't, if you still are not, if you don't have certain background, it doesn't make any problem for you. So you can see it's a very healthy course outline over there. So we will try to do all the scenarios in theory and code and labs as well, right? By one by one. Okay, during this course, we will also conduct some your quizzes, your assignments, and in the last of this course, we will also simulate some simulators for your final exam when you go for a final exam from the Cisco. So this will basically give you an idea that how you will then go for a certification in a real-time environment. Okay. So, so we will again move to the Cisco. Right, you can see that it's the topic is basically the evolution of campus switching. Right. You can see in the future we have different switches, different routers. Routers, basically all are making a good network infrastructure and providing you the maximum uh, options for your networking. So these are the little terms that how these vendors has given us an opportunity to deal these platforms. Like you can see that we have a security, then we have a mobility, and then we have an application assurance. There are the different, you can say, Cisco Vault Campus enables, and what are the benefits, and what are the services which is provided by a Cisco, right? These are some little Cisco standards. Like if we talk about the year 2000, you can see that we are in the line power of 7 watt, and then we are moving towards the 2003. We need 15 watt PoE power of the Ethernet, and so on. So these are basically the Cisco innovations drive industry in the standards, which is traveling after a certain time. Right. These are basically the campus blueprint, like how your system is basically designed in an infrastructure level design. That if you are designing any network in any organization, so what would be the basic familiarities and structure that you should follow? Okay. These are some vendors, brands, like you can say Cisco Catalyst 2960X. Then you have Cisco Catalyst 3850, 3650, which have basically 480 gigabit stacking, 4 into 10 gigabits uplink power, and like this. So basically, Cisco has moved from a traditional to an right now an application-based scenario. That how it's going on in the current scenario, right? So you can see that in the early 2000 we have some wireless standards, and now if we carefully look into it, that everybody is basically looking for a high-speed internet and certain things like multimedia streaming, and so basically the bandwidth has been increased day by day,
and still we are looking for some high bandwidth applications. Okay, you can see some wireless standards like if you see earliest 2000, we need we have a standard of 802.11a, 802.11b, which is providing basically the 11 megabits per second data rate, right? Then we move into around 2003 where our standard is basically 802.11g, and then 54, which is occupied by 54 megabits per second. Then in the 2007 we have around standard of 802.11 where we have 450 megabits per second. And later on, if we talk around 2011 2013, we have 802.11 AC, which is around 1 gigabits per second. And currently, if you are looking for some wireless standard, then we have 802.11 AC, which is wave 2, and it is basically providing you a 3.5 gigabits per second and 6.9 gigabits per second. So basically, the bandwidth standards and the wireless standards are increasing drastically from year 2000 to 2020 till now. So there are some vendors, you can say contributors and adopters that all are basically aligned with all these standards. You see in the founder list, you can see a Cisco, Intel, Marvell, Aquentia, Linux, Qualcomm, and T-Scale. So these are basically the founders. Okay, you can see some multi-gigabit technology. Right now, we are living in an age of very high-speed internet networks, multimedia streaming, and all these things. So basically, all these services has been supported to some device which basically supports all these services, right? So you can see a multi-gigabit switch port, 2.5 gigabit, and 5G, and all these things. So these are the different catalyst switch of Cisco's, Catalyst 4500E, and Catalyst 3850, and the Catalyst 3650CX. So these are basically all the Catalyst products which are basically for 802.11 AC Wave 2. Right? These are some Cisco multi-gigabit Ethernet. So these are some basically the cabling types. In the conventional cabling types, we were using basically the basically आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग पहले इंटरनेट कनेक्शन जो होते थे बहुत स्लो होते थे, डायल अप कनेक्शन होते थे, DSL कनेक्शन होते थे, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन नहीं देते थे, स्पीड आपके पास प्रोवाइड नहीं करते थे। लेटर ऑन जब हम जैसे जैसे मूव करके गए हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त केबलिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंट केबल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। इसमें आपके पास UTP केबल्स आ गई हैं, STP केबल्स आ गई हैं, और सबसे जो फास्टेस्ट आजकल जो मीडियम है बेसिकली ऑब्वियसली वो है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो इसमें डिफरेंट आपके पास ये सिनेरियोज आ गई हैं। ये जो आपके पास Cat 5e या Cat 6e या Cat 6a दिया हुआ है, ये बेसिकली आपके पास जो है वो UTP केबल की टाइप्स हैं, जिसमें ये उसकी एक सर्टन रेंज बता रहे हैं कि 100 मीटर में है, अगर 1 गीगा है या 2.5 गीगा है तो उसमें आप 100 मीटर की रेंज है आपके पास। इसी तरह अगर आप 5 गीगा में जा रहे हैं तो आपके पास अगेन 5 मीटर की रेंज है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स या केबलिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, राइट। तो इसमें आपके पास डिफरेंट अपलिंक्स की बात की गई है। So you can see a new Catalyst 3850 10 gigabit fiber switches. So this is basically like एक तरह का एक मॉड्यूल है जिसमें आपके पास आप इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल इसके अंदर स्टैक यूज़ कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि स्लॉट्स यूज़ हो रही हैं। ये बेसिकली आपके पास एक नॉर्मल स्विच है जिसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट उसके जो पार्ट्स शो किए गए हैं। फिक्स पावर सप्लाई है, फैन है, और इसमें स्टैक बाई सिस्को स्टैक है। 48 ये बेसिकली एक 48 पोर्ट का स्विच है
ठीक है, जिसमें नॉर्मली फाइबर ऑप्टिक भी आपके पास टर्मिनेट हो जाती है और नॉर्मली आपके पास जो ईथरनेट केबल्स होती हैं, राइट, वो भी आपके पास इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है। अगेन ये एक आपके पास पावर लाइन का स्विच है और ये साइड है। फिर इसमें टोपोलॉजीज की बात की जाए, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, नेटवर्क प्लगइन विद एपिक EMI। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम एक फिजिकल लेयर के बारे में थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि फिजिकल लेयर क्या है। बेसिकली वैसा ही लेयर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने जिससे नोन होंगे। फिजिकल लेयर बेसिकली द लेयर वन बेसिकली विच इज़ प्योरली डील विद द हार्डवेयर। इसमें आपके पास हार्डवेयर कनेक्शंस की बात होगी, किस तरह से आपके नेटवर्क के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको तो आगे आगे इंशाल्लाह कोर्स में जैसे जैसे आप मूव करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाते हैं। फिजिकल लेयर के बारे में, फिजिकल लेयर किस तरह से काम कर रही होती है, कौन कौन सी डिवाइसेस सपोर्टेड होती हैं, और दूसरी जो लेयर्स होती हैं आपके पास एप्लीकेशन लेयर है या सेशन लेयर है, और किस तरह से आपके पास सपोर्ट करी होती है टू द फिजिकल लेयर, राइट। This is basically an OSI model. You can see physical layer is basically इसके different standards हैं, are implemented in hardware and are governed to many organizations like ISO है, EIA, TIA है, NCI है, ITU-T है, इसके अलावा IEEE है। तो ये बेसिकली कुछ एनकोडिंग स्कीम्स हैं कि बेसिकली आपके पास जिस तरह से एनकोडिंग कर रही होती हैं, किस तरह से डाटा को एनकोड कर रही होती हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, लाइक तो ये इसकी सिनेरियो दिया हुआ है। सिग्नलिंग की बात हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ी सी बैंडविड्थ की भी बात करते हैं कि अगर किलोबाइट्स पर सेकंड है kbps है, या मेगाबिट्स पर सेकंड है mbps है, या गीगाबिट्स पर सेकंड है gbps है, तो किस तरह से हम अपने जो बैंडविड्थ है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बैंडविड्थ को किस तरह से हम बेसिकली कैलकुलेशन इन चीज़ों में सपोर्ट करती है टेराबाइट्स पर सेकंड के अंदर। अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है आप जिस तरह से डील कर रहे होते हैं उसकी एक यहाँ पे कैलकुलेशन है। डिफरेंट इसमें टेक्नोलॉजी है, लेटेंसी है, थ्रूपुट है, इसके अलावा गुडपुट है। इसमें बेसिकली कुछ केबलिंग, कॉपर केबलिंग के बारे में भी बताया हुआ है कि कॉपर केबलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिफरेंट कॉपर की केबल्स दिखाई हुई हैं कि ये जो हम बात करें कि यूटीपी केबल है या एसटीपी केबल है या कोएक्सियल केबल है, इनके अंदर डिफरेंट क्या इनके प्रोज क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं। यूटीपी केबल्स के क्या प्रोज हैं, एसटीपी केबल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉन्स हैं, राइट। कोएक्सियल केबल जो कि हमारे कन्वेंशनल अभी भी शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो घर में जो आपके पास केबल आ रही है टीवी के पीछे जो केबल लगती है, लाइक आपके पास जो, तो वो बेसिकली आपके पास एक कोएक्सियल केबल होती है और इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है 1 2 3 4 में, और उसके डिफरेंट जो कनेक्टर्स हैं BNC एंड टाइप एंड F टाइप कनेक्टर्स, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसी तरह यूटीपी केबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है कि इसके 4 पेयर्स ऑफ कलर कोडेड कॉपर वायर्स होती हैं, राइट, जो कि आपके पास जो है नॉर्मली एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं, और इनको बेसिकली आप इसमें आपके पास जो एक बहुत बड़ा एक अहम फैक्टर आता है वो आपके पास EMI आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसिंग या RFI। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको क्या करना होता है, इन चीज़ों से आपने इनको निगलेक्ट करना होता है, या यू कैन से कि इनको
एक्सपोज नहीं होना होता आपको EMI के थ्रू, अदरवाइज ये आपके पास सिग्नलिंग को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं।